Okay, previous class we started ratio analysis topic, and in that already explained there are three types of ratios: profitability, solvency, activity or turnover. In solvency, again we have two classifications, that is long term and short term, or liquidity or balance sheet or leverage ratios. So first we are starting with profitability ratios. Profitability ratios again divided into three categories. First is based on sale, second is based on investment, third is related to shareholders. Okay, so first which is based on sale is gross profit ratio, net profit ratio and operating profit ratio. Next, based on investment is return on investment, return on capital employed, return on equity shareholder funds. And thereafter shareholders, related to shareholder, return on equity shareholder funds, earning per share, dividend per share, dividend payout ratio, price earning ratio, earning yield, dividend yield, market price per share. These are the various types of ratios. Okay, तो पहले ये लिख लो सभी, copy this. Yesterday already I explained this, but writing part is pending. So first note this till classification of ratios. Thereafter, when individually we'll start discussion, then again if any doubt is there, students can ask.
Profitability ratios are generally used by the user of financial statement to analyze profits and return on investment. What is the earning capacity of company and what is the return generated by company on investments. Here different parties are interested in different ratios. Like from overall return point of view, if investor want to analyze, return on investment ratio will be used. Means overall return means in this for debenture holder also, shareholder also, overall point of view, when they are understanding the return performance, that is return on investment. Only from equity shareholder point of view or shareholder point of view, if user of financial statement want to analyze, means it will be return on equity. Return on equity means only shareholders are interested in this. Debenture holder is not interested in return on equity because debenture holders interest is already subtracted here. Clear? So only net return is used here, which is payable to shareholder. So one by one we'll start the discussion. First you can copy this.
Now, first ratio in profitability is ratios based or related to sales is gross profit ratio. Actually, nowadays company will not calculate the gross profit because financial statement structure format of companies directly calculate the net profit. Gross profit is used only for proprietary partnership firm or maybe for other enterprises. Joint stock companies will not calculate gross profit because their financial statement format directly related to net profit calculation. When you study company financial statement topic, you will understand this point. So in company financial statement, I will explain. Key directly they will calculate what? Net profit. But this is used in past and institute has also not updated the materials. So they will test the questions from gross profit route also. Both the institute has not updated the complete material. So even some questions are directly linked with gross profit. Okay, that's why we are also continuing with gross profit. So very simple. Other organizations can use this like proprietary partnership firms like, but companies there is no usage of this gross profit ratio. So gross profit is very simple, profit earned from buying and selling activity upon sales. Sales will be net sales, net of returns. Gross profit can be calculated by preparing trading account, or generally we can calculate gross profit from different route also. One more route is also available, that route is sales minus cost of goods sold. So from sales if you subtract cost of goods sold, we'll get the gross profit. Cost of goods sold means what? The goods which is sold, on that how much cost has been incurred by the entity. The goods which has been sold now, what is the cost of that goods? Clear? That is called as what? Cost of goods sold. But in this cost of goods sold, complete all types of costs are not taken into consideration. Here administration selling is excluded. Administration selling is excluded. Clear? So opening stock, purchases, direct expenses minus closing stock is cost of goods sold. When direct expenses only factory related items will come. Administration selling will not come. Because when we use the term cost of goods sold, students think ki all types of cost which is incurred for selling the goods is covered in this. No. Here administration, indirect expenses are not part of cost of goods sold. Direct only. Only what? Direct. Because gross profit is from buying and selling activity only. Direct. Gross profit is from buying and selling activities direct. So it is a direct nature income. Net profit is covers both direct, indirect, overall items income. This is the reason ki cost of goods sold will do not consider administration, selling and distribution. Formula is opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock. Opening stock plus purchases minus closing stock is material consumed. Is what? Material. So how much amount of material is consumed plus direct expenses is what? Cost of goods sold. So sales minus cost of goods sold will get gross profit. Understand? Now you can copy this. See, financial management compulsory you have to write the notes. Directly if I explain now, you will forget so many things and major points will not able to recall. Theory there is no need to note anything, but practical points compulsory have to note.
So gross profit completed now. Next is your net profit ratio, operating profit ratio, operating ratio. These three ratios are also related to sale. Why this is related to sales? Why if there is more sale, gross profit will also more. Less sale, gross profit decrease. Similarly, if sale is more, operating cost will increase or decrease? Increase. If sale is decreasing, operating cost also decreasing, because operating cost is a direct cost. In examination, sometimes they will not give cost of goods sold word. They will give direct cost word. So direct cost is cost of goods sold. So directly means with sale volume it will increase or decrease. If sale increasing or decreasing, cost of goods sold is also increasing or decreasing. Okay. Now the question is, in related to sale, we are calculating two types of ratios related to your operating. One is operating profit, another is operating cost. Operating profit means profit which is earned by the company from principal activities. From principal activities, whatever profit earned by the company, that is termed as operating profit. So many activities are available. Actually, total three types of activities will be there: operating, financing, investing. So investing activity also available, financing activity is also available. From this also company can earn some income. But these items are not principal revenue generating activity of the company. So principal revenue generating activity is called as operating, main core activity. Clear? So from core main principal activities, when company earns the profit, that is called as operating profit. Why this is important? Suppose one company's profit and loss statement you are analyzing. That company is earning 200 crores profit. Previous year it was 100 crores. This year it was 200 crores. But in this 200 crores, 120 crores is the income which is coming from principal activities, and 80 crore is the income which is coming from other activities. Previous year it was 100 crores. Okay. So you are thinking कि previous year 100 crore, this year 200 crore. So 100 crore profit increased. But operating profit is increased by 20%, because previous year total 100 crore profit is operating profit. This year operating profit is 120 crore. So previous year suppose 100 crore profit, this year suppose 200 crore profit. Previous year this is completely operating in nature. This year 120 crore is operating profit, 80 crore is non-operating profit. Okay. So we cannot say that there is a 100% increase in the profitability. No. Profitability is increased by 100%, but principal activities of the company is, in that how much increment has taken place? 20% only. That is important for investor. Always check principal activities. In from principal activities, if income is increasing, that is good for the company. But here only 20% increasing. Okay. So this is also good sign. No problem. You can invest in that. But suppose the situation is like this. This is 80. This is 120. Then investor will not prefer, because from principal activities profit decreased. So this is not a good sign. Okay. That's why this operating profit ratio is important for investor. Understand? Principal activities income should increase, because it is a regular income. That is the main principal income for the company. Now next is operating ratio. Operating ratio is operating cost upon sale. Operating cost means cost which is incurred directly in buying and selling activity. Clear? So in buying and selling activity, whatever cost is incurred plus any other cost which is incurred
in the business which are of operating nature is called as operating cost. Cost of goods sold is only buying, selling. Cost of goods sold is only what? Buying and selling. But operating cost word when we use, in this generally we have to use expenses which are direct in nature and expenses which are indirect in nature also. Operating cost means for principal activities of business, how much cost has been incurred by the company. So selling and distribution is also principal activity or not? Without selling and distribution expenses, you can operate the business. For operating the business, we have to incur three different types of expenses. Factory expenses also, administration also, selling and distribution also. All are necessary or not? But in this, factory is direct. Administration, selling is indirect. So factory is already included in cost of goods sold. Factory is already included in cost of goods sold. Administration, selling and distribution is not part of cost of goods sold. Clear? So total operating cost, if you want to calculate, that will be cost of goods sold plus administration plus selling and distribution also. That is called as what? Total operating cost. So from total operating cost, when we calculate the ratio, that is called as operating ratio. Operating ratio is nothing but operating cost ratio. Operating cost means all operating expenses of the company. In this, factory expenses are also there, administration also there, selling and distribution also there, material consumption is also there. Clear? That's why in calculation of operating ratio, we cover cost of goods sold plus operating expenses. Cost of goods sold plus operating expenses, or in other words, it is operating cost. Cost of goods sold plus operating expenses is called as what? Operating cost. So operating cost divided by net sales into 100. So operating cost is cost of goods sold plus operating expenses. Clear? Now in operating expenses, what items will come? Administration expenses, selling and distribution expenses will come. In operating, these expenses will cover. Okay? Understand? So this is operating ratio. Next is operating profit ratio. Operating profit ratio means already I explained. Okay, this is calculated from principal activities of the business. Net profit is profit earned from overall activities. Profit earned from overall activities. Like very simple, by in simple way I will explain one thing. Suppose India has scored 220 runs in T20 match. Okay? In this, 30 runs are extra runs. Like opposite team has bowled no balls, wide balls, overthrow, etc. etc. And remaining 190 runs made by the Indian team from their own skill and effort. Clear? So this is operating. This is what? This is non-operating. Because in every match this will come, huh? That's why this is non-operating. So in income also, every year interest income, dividend income or profit on sale of asset, this is compulsory? No. If company is selling any asset, then profit will arise. So every year company will sell the asset, not compulsory, na? When asset became sold, then only they will sell. So when asset sold, there is a profit, and that profit credited to P&L, sometime loss also. And generally when extra funds are there, company will deposit, interest will come. When company invest in shares, dividend will come. When company is investing in properties, rent will come. So this is not compulsory ki every year this income will come. That's why this is called as non-operating. And from which activity mainly organization earning the income? Suppose your company name is Agro Product Limited. Clear? So it means your company will earn the income mainly from agriculture related items. So from agriculture related items you sold, whatever income you generate, that is your operating. Suppose if you earn the income from interest,
or by investing in share market you earn dividend, that is not operating. That is what? Non-operating. I hope you understand this, right? Now operating profit can be calculated from two different ways. Now you understand what is operating profit, but how to calculate operating profit, that is also important, na? Operating profit can be calculated in two different ways. One is from gross profit route, another is from net profit route also. What is this? See, suppose this is P&L, this gross profit is 2 lakhs. Clear? Then interest, suppose 20,000, dividend 10,000, rent 50,000. Okay, next commission. This commission is came from trade activities. Suppose this is 5,000. Now here administration expenses, suppose 1 lakh. Selling and distribution expenses, suppose 75,000. Suppose there is a loss on sale of asset, $10,000. Okay, there is a interest expenses, 25,000. Okay, so credit side total 285. Debit side total, so net profit 75,000. This is net profit. Now from this we have to calculate operating profit. Now suppose this company is manufacturing on agriculture related seeds, not manufacturing, suppose they are selling the agricultural seeds, agricultural products, and from that they are earning the income. So dividend income is related to agriculture, interest income is related to agriculture, rent, commission, trade, this is agriculture base, because agriculture deals they have made, from that they earn 5,000. So first route is gross profit route. First route is what? So in this, first gross profit will come plus commission also. This is operating income. Now operating expenses are administration, selling and distribution. These are operating expenses. So this is 2 lakhs. This is 5,000. Administration 1 lakh. Selling and distribution 75,000. So total how much? 30,000. So 30,000 is what? Operating profit. This is we calculated from gross profit route. Now operating profit we can calculate from net profit route also. Which route? Net profit route. So net profit route, net profit plus non-operating expenses. Non-operating expenses means loss on sale of asset is operating or non-operating? Because company's main business is agriculture. Their business is not sale of assets. If their main business is sale of asset means this will become operating. Clear? But their main business is what? Agriculture. So sale of asset is not related to operations. This will not regular in nature. That's why this is what? Non-operating. Interest, non-operating. So
minus non-operating income. Non-operating income. So net profit how much? Non-operating expenses. Loss on sale of assets 10,000. Interest 25. Non-operating income. Interest 20. Dividend 10,000. Rent 50,000. How much? कितना 40 आ रहा. So these are the two different routes of calculating operating profit. Clear? So examination, they can ask the question from gross profit route also, they can ask the question from net profit route also. Okay, clear? चलिए लिख लो इसे. So operating ratio noted. Now why in net profit route non-operating expenses added and why non-operating income deducted? Because in net profit incomes are added by default, so we have to subtract, and when we calculated net profit expenses are deducted, so reversal required. Understand? समझ में आ रहा है बाकी के बच्चों को सबको?
In Indian point of view, interest is non-operating. Foreigners interest operating month hai. Because regularly they will borrow and regularly they will pay interest. So cash flow statement, when we study Indian cash flow statement AS3, interest is financing item. In AS 7 IFRS Indian padhenge अपन IF International Accounting Standard 7. In that cash flow statement, interest dividend is operating. Interest dividend is operating. Because for business purpose they will borrow and for business purpose they will repay. But here it should be non-operating. Only for extra knowledge I am explaining this point. Operating expenses means administration, selling and distribution. Operating income means trade commission. Non-operating expenses means interest on debentures or borrowings, loss on sale of assets, donation, charity, CSR. CSR means corporate social responsibility. This you will study in law subject. Income tax law paper also. Direct tax. Is any company whose net worth is more than 500 crores, that company has to contribute towards CSR. And operating ratio, operating profit ratio, total should be 100%. If you add this two, it must be 100%. Next is net profit ratio. Net profit ratio is net profit upon sale. So net profit already you understand that this is profit after tax. This will be what? Profit after tax. PAT. So net profit should be always after tax. Okay, net profit ratio also completed. Next is based on investment. So if you want to analyze the profitability of company related to investment, then first ratio is return on total assets. Return on total assets is profit after tax by total assets. Some authors will use profit before interest and tax formula also, but always you should prefer first formula. If in examination specifically they mention this, you should follow this. Otherwise always you should follow first formula. So this is PAT by total assets, profit after tax by total assets. Suppose total assets of company
is 2000 crore and profit after tax of the company is 400 crore. So percentage return on total assets will be how much? 20%. Return on total assets will be how much? 20%. Now one more company is there. That company's total assets are 4000 crore. PAT is 1000 crore. So return on total assets will be how much? 25%. So generally you will prefer this company. You will prefer this company because this company's return on total assets is 5% more than other company. Okay. So why this return on total asset concept is used? Why they are using total assets? Total assets means these assets will be used for doing the business operations. And by doing the business operations, how much profit they are earning? 400 crores here and 1000 crores here. So percentage wise, which company's performance is better? This company. That's why you will prefer this company. So any company whose return on total assets is high means that company is earning good return from the total assets. Assets will be used for generating the revenue and income. Without assets you cannot generate the revenue. By capital is liability, but from capital you will earn the income, or from assets you will earn the income. Assets, because capital is ultimately converted into assets like plant and machinery you purchase, fixture fitting, office equipment, and from that you will manufacture the goods, and that is generally sold, so revenue will come. That's why return on total asset is also important for investor. So any company whose assets are less, PAT is very high means always that company is preferable to invest. असेट्स कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी कंपनी है वो. क्लियर? क्योंकि कम असेट से ज़्यादा प्रॉफिट ला रहा ना वो. असेट्स कम है और प्रॉफिट ज़्यादा रहा है तो अच्छा है खराब है? अच्छी कंपनी है, तो जनरली विल प्रेफर दैट. नेक्स्ट, टोटल असेट्स में जनरली वी शुड कंसिडर ओनली द असेट्स विच आर able to sell or convertible into cash. Fictitious assets are not part of assets. Fictitious assets means now in new balance sheet format there is no place for fictitious items, but if question is given from old format, sometime there is a fictitious asset also in balance sheet. Fictitious asset means assets does not have any realizable value. Only for tallying the balance sheet it will be recorded, but it does not have any realizable value. Nobody will purchase and nobody will sell this. Only balance sheet tally करने के लिए लिखते हो. Example, revaluation reserve है वो, asset नहीं है. It is revaluation reserve, not asset. Example, preliminary expenses है. Preliminary expenses. Preliminary expenses means what? When you are starting a company, incorporating a company, initial stage you have to incur expenses or not? Initial stage में you have to incur expenses or not? You have to prepare memorandum, you have to prepare articles, you have to pay solicitor charges, registration fees, so much of laws you have to follow, regularities you have to follow. So for that you have to incur some heavy cost. So that cost is called as what? Preliminary expenses. So if you debit entire preliminary expenses to P&L, generally there is a possibility of loss in first year. Okay, so previously when accounting standards have not been modified and updated, some portion of preliminary expenses debited to P&L and remaining will be shown in balance sheet asset. New format, there is no place for these items, because in new accounting preliminary expenses should be debited to P&L in the year of incurrence only. It will not have any place in balance sheet. But old accounting, in old traditional accounting, some preliminary expenses will be debited to P&L, some preliminary expenses will be showing on asset side. Okay, but any person will purchase preliminary expense. You can sell preliminary expense. That's why it is not an asset. So in modern accounting, any asset which does not have
realizable value which cannot be saleable, that is not treated as asset. So that is fictitious. That is what? Fictitious. Fictitious means illusory. Fictitious means what? Illusory. Film story. बाहुबली फिल्म देखेगा, रियल है वो. Fictitious. All characters are what? Fictitious. Only for entertainment purpose. Only for what? So in balance sheet also, preliminary expenses, discount on debenture, underwriting commission, P&L, debit balance, all these are fictitious in nature. In new balance sheet there is no place for this. Old में रहा तो आता है, new format में तो आता ही नहीं है, बेफिक्र रहिए आप. Because FM subject sometime they will give questions on old format also, sometime questions on new format also. CA, CMA both. Accounting paper always question will come from new format. FM में दोनों से आ सकता है, old format से भी आ सकता है, new से भी आ सकता है. इसलिए we should have knowledge about this. Okay. One more example. Suppose you want to advertise your product. You want to advertise your product. So one company has given offer. If you are giving 1 year advertisement cost or 1 year option, you will charge 2 lakh rupees. If you take 5 years advertisement option, you will charge 3 lakhs only. Right? So you want to advertise the product. For 1 year they are charging 2 lakh rupees. For 5 years they are charging 3 lakh rupees. So you opted this. You opted this. Clear? Now when you prepare financial statement, entire 3 lakh rupees you will debit in P&L. 5 साल का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिया आप, तो P&L में कितना लिखेंगे? 1 साल का लिखेंगे ना, या पूरे 5 साल का लिखते? 1 साल का लिखते हो. ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में 1 साल का लिखेंगे ना. मेरा एग्जांपल समझ में आ रहा है, बाउंसर हो जा रहा है? आ रहा है समझ में. तो 5 इयर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे करें आप 3 लाख रुपीस. तो फर्स्ट ईयर में कितना डालेंगे? 3 लाख डिवाइड बाई 5, 60. बैलेंस शीट में कितना डालेंगे? 240. P&L में कितना डाले? 60. बैलेंस शीट में कितना डालेंगे? 240. तो ये बैलेंस शीट में 240 डाले, किस में डालेंगे? एसेट में डालेंगे, लायबिलिटी में डालेंगे? एसेट. नाउ दिस 2,40,000 rupees is asset. Now you can sell this asset. Anybody can purchase this asset. इसलिए fictitious है वो. But modern accounting में this will not come in balance sheet because accounting standard 26 prohibit this. Accounting standard 26 उन्होंने बोलता है एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आता, प्रिलिमिनरी भी नहीं आता, डिस्काउंट भी नहीं आता, अंडरराइटिंग भी नहीं आता, पूरा P&L में डालो बोलता हूँ. किस में डालो बोलता है? बैलेंस शीट में सिर्फ वही लिखो जो बिकता है, जिससे पैसा आता है. ऐसा कोई भी आइटम जिससे कोई पैसा नहीं आता बेचने पर, या जिसको कन्वर्ट करने से कोई सर्विस नहीं आता है, वो आइटम बैलेंस शीट में लिखना ही नहीं. या तो उससे पैसा आना, या तो उससे क्या आना? सर्विस आना. वही आइटम कहाँ लिखेंगे आप? बैलेंस शीट. क्लियर? तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह सब P&L में डेबिट कर दो बोलते हैं न्यू मॉडर्न अकाउंटिंग में. ओल्ड अकाउंटिंग में दिस इज ऑल्सो डिस्क्लोज्ड ऑन असेट साइड. दैट्स व्हाई दिस इज ट्रीटेड एज व्हाट? फिक्टिशियस. प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते नहीं बेच सकते आप? असेट में लिख सकते हैं आप. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों लिखते हैं असेट्स में? सर्विस आता आपको. क्या आता? सर्विस आता है. क्लियर? जैसे एडवांस में दे दिया पैसा आप. क्लियर? बट एडवर्टाइजमेंट्स का जो एक्सपेंसेस है वो नहीं लिखना. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज डिफरेंट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यू कैनॉट डिफर. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस यू कैनॉट डिफर. प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे आ रहे फिर? एडवर्टाइजमेंट से भी आ रहा सर्विस. प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 1 साल के रहते. देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने साल का रहता मालूम है आपको?
एक ही ईयर का रहता, लेकिन इस ईयर में थोड़ा आता, अगले साल में थोड़ा आता आपको. फॉर एग्जाम्पल, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट इज 1 अप्रैल 2022 to 31st March 23. Okay, suppose you paid the health insurance premium of employees, but that health insurance premium is taken on 1st June, and 1 year is completing on which date? 1st July है समझो. So 1 year is completing on which date? 30 June 23. But 30 June 23 means your accounting year financial statement date is what? 31st March only. So April, May, June, these 3 months expenses you can record in this year? No, that will come in. इसलिए बैलेंस शीट एसेट में आता है, वो एक साल का ही है वो, बट ईयर में प्रॉब्लम होने के कारण अगले साल चले जा रहा हूँ, इसलिए बैलेंस शीट में लिख रहे. एडवर्टाइजमेंट तो क्या है, 5 साल का है, इसलिए उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखना बोलता है. अभी आगे अकाउंट्स पढ़ा जाए, पूरा पोस्टमार्टम करता हूँ मैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या समझ रहे हैं आप? 5-10 साल के रहते क्या? ओनली 1 ईयर का रहता है वो. सम पोर्शन विल फॉल इन दिस ईयर, सम पोर्शन विल फॉल इन नेक्स्ट ईयर. दैट्स व्हाई वी कैन रिकॉर्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन असेट साइड. ओके, तो फिक्टिशियस असेट्स अंडरस्टैंड, राइट? चलिए, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. So return on capital employed or return on investment means whatever amount is invested by company, on that how much return they are earning. So what amount company has invested means company has raised the funds from equity share capital. कंपनी कहाँ से पैसा लाता? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, देयर ओन सर्विस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. ओके, डेबिट बोल तो लोन आ गया उसके अंदर, डेट बोल तो पूरा आ गया उसके अंदर. ये पूरा पैसा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ फ्रॉम दिस, ये सपोज टोटल है 1000 करोड़. कितना ये? 1000 करोड़. नाउ फ्रॉम दिस सपोज 800 करोड़, 900 करोड़ they have invested in assets like land and building, इस property plant equipment किस में लगा दिए लोग? property plant equipment and current assets में लगा दिए. किस में लगा दिए? property plant equipment and current assets में लगा दिए, या property plant equipment लगाया समझो. चलो, और remaining 100 crores they invested in investments. Investment means they purchase suppose shares of another company या bonds of another company. तो फिर 1000 crore is not treated as capital employed. 900 crores only treated as capital employed because 100 crore amount you have invested in shares, debenture, bond, and shares, debenture, bond investment will not give any benefit to your business. पैसा बाहर चले गया ना वो. देखिए 1000 crore आप बाहर से लेकर आए. कैसा लेकर आए? इक्विटी शेयर इशूड, प्रेफरेंस शेयर इशूड, डेट, and your own reserves and surplus also. So total how much you have? From this 900 crores assets you purchase. So these assets are in your business now. So 100 crores you invested in, suppose Reliance Industries. 100 crores you invested in Reliance Industries. So 100 crores amount is utilized by you or Reliance? Reliance. That's why that is not part of capital employed. It is not part of, only they will pay dividend. What they will pay? Dividend. That's why it is not part of what? Capital employed. So whenever you calculate capital employed, it should be operating capital employed. क्या रहना वो? Operating. So any amount which is invested and which is not there in your hand, that is utilized by some other entities, that is not part of your capital employed. Suppose ऐसा है समझो, 50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट कर दिए रिलायंस में. आप किस में कर दिए? रिलायंस में. और 50 करोड़ का एडवांस दिए एक सप्लायर को. क्या दिए? एडवांस फॉर परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, फॉर परचेज ऑफ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जांपल? आउट ऑफ 1000 करोड़ 900 crores property plant equipment you purchase.
50 crores you have invested in Reliance. फिर से लिखता हूं मैं एग्जाम्पल. 1000 crore लेकर आए. आप कैसे लेकर आए? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सपोज इससे 400 लाए, से 200 लाए, से 200 लाए, से 200 है समझिए. तो टोटल इज 1000 crore. From this, suppose they have invested 900 crores in property, plant, equipment, and suppose they invested 50 crores in Reliance Industries shares, and 50 crores they have given advance to supplier for purchase of PP, property, plant, equipment. Now in this particular case your capital employed will be how much? Capital employed 900 रहेगा. आप क्यों? This 50 crore amount is not in your control. This is in the control of Reliance Industries, and this 50 crores advance you have given to supplier, but supplier has given the asset. वो भी पैसा किसके हाथ में? असेट नहीं आया है तुम्हारे पास अभी. असेट आया क्या? उसका फायदा उठा सक रहे क्या आप? तो इसलिए ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएगा आप. ये मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड का. अंडरस्टैंड? सो कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी व्हाट? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. असेट शुड बी इन योर कंट्रोल, रिसोर्सेस शुड बी इन योर कंट्रोल. So any resource which is not in your control or asset is not there in your control, that is not part of capital employed. Understand? ये पूरा अच्छे से पढ़ लो, फाइनल में काम आता आपको. So how to calculate return on capital employed? How to calculate return on capital employed? So formula is profit before interest and tax divided by capital employed. Means here we will not consider PAT. इधर PAT नहीं आएगा, इधर क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा. कुछ ऑथर्स डिफरेंट फार्मूला भी यूज करते हैं, कुछ ऑथर्स ऐसे भी यूज करते हैं. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट भी यूज करते हैं, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. सम ऑथर्स विल यूज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओनली, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. दोनों ही सही है. ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करिए बोलता हूँ. व्हेन दिस शुड बी यूज, व्हेन दिस शुड बी यूज, आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. ओके. इंटू 100 रहेगा यहाँ पर हमेशा, इंटू 100 इंटू 100. So profit before interest and tax by capital employed is the formula. Now why this formula is coming? We have to understand the logic also. आप ऐसे इससे पहले जब भी सब्जेक्ट पढ़े कभी फार्मूला कहीं के लिए आया नहीं समझे कभी आप, थोड़े चैप्टर में समझना पड़ेगा. You need to understand this. Why profit before interest and tax is coming here? Reason is capital employed. What items we have taken? Equity shares we have taken, preference shares we have taken, reserves and surplus also taken, debt also taken. So it means we have to give return to debenture holder also, we have to give returns to preference shareholders also, we have to give returns to equity shareholders also. So equity shareholders को भी रिटर्न देना है, preference shareholder को भी रिटर्न देना है, debenture holder को भी रिटर्न देना है. Clear? So debenture holders what we have to pay? Interest, and this we have to pay. So before interest, before dividend, how much profit is earned by the company? Before interest, before dividend, how much profit is earned by the company is called as PBIT. So before interest, before dividend, total कितना profit कमाया कंपनी ने इस amount पर, because ultimately this is invested ना. Suppose capital employed of the company is 2000 crore. So this is ultimately invested in assets or not? And profit before interest and tax of the company is
Suppose 500 crores. It means on 2000 crores investment, how much profit they earn? तो इसका मतलब कितना परसेंट आ रहा है? 25%. So this is return on capital employed. Return on, इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को नहीं मिलता आपको. पूरों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के परसेंटेज जो आते ना वो 10 से 15 के बीच में आते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत हाई रहता है. बिकॉज इन दैट वी आर टेकिंग इक्विटी कैपिटल ऑल्सो, प्रिफरेंस कैपिटल ऑल्सो, रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑल्सो, डेट ऑल्सो. सो डिनोमिनेटर विल बी वेरी हाई. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर अगर किसी कंपनी का 25% है, ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना. ऐसे कौन सी कंपनी है जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा है? जिलेट, प्रेस्टीज, सन फार्मा, मार्क सन फार्मा. क्लियर? डॉक्टर रेड्डीज लैब का तो 16% ही है अभी, फिर भी उसका शेयर इतना ही है. टाटा ELXI का भी 20% है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है रहता है, ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना. लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट आता है उसमें. शॉर्ट टर्म में नहीं तो नहीं, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट आएगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने इस कैपिटल एम्प्लॉयड से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहा है. क्लियर? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ टू कैलकुलेट, यू अंडरस्टैंड. समझ में आइए? मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग दिस अमाउंट एंड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट अमाउंट, बिफोर पेइंग इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, बिफोर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर, हाउ मच परसेंटेज ऑफ income they are earning. It means, so before paying interest, before paying dividend, how much they are earning, that percentage on the basis of capital employed is called as what? Return on capital employed. तो देखिए, इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ उसमें से. क्या माइनस नहीं हुआ? इंटरेस्ट इज नॉट सब्सट्रैक्टेड, डिविडेंड ऑल्सो नॉट सब्सट्रैक्टेड. So before interest, before dividend, whatever income they earn, that percentage upon capital employed is called as return on capital employed. Clear? Understand? समझ में आए? Now how to calculate this? There are two routes for calculating capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड करने के दो तरीके हैं. क्या दो तरीके सर? सपोज दिस इज टी शेप बैलेंस शीट. एक्चुअली बैलेंस शीट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन टी शेप, वर्टिकल बनता है बैलेंस शीट, बट आई एम एक्सप्लेनिंग टी शेप बैलेंस शीट. कंपनी बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. इट इज नॉट लाइक योर प्रोप्राइटरी, जैसा दिल में जो आइटम आया लिख दिए वैसा नहीं है. कंपनी बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. फर्स्ट नॉन करेंट असेट्स विल कम. व्हाट विल कम? देन current assets will come. Here liabilities में first shareholder funds will come. What will come? Then non-current liability, then current liability. This is the balance sheet structure. Okay. So we can calculate capital employed from asset side route also, liability side route also. Understand? अब non-current assets means what? Current assets means what? You will understand in फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. कहां पे समझ में आएगा वो? अभी मैं नहीं समझाऊंगा, वो समझाने बैठा तो फिर टाइम उसमें चल जाएगा. ओके? क्लियर? सो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी. ऐसा भी सेकेंड ग्रुप में कॉर्पोरेट पढ़ते ना आप, और ये तो स्टूडेंट फाउंडेशन के तो सीए में पढ़ के आएंगे कंपनी अकाउंट, तो उसमें तो पढ़े होंगे नॉन करेंट करेंट क्या है. फिर नहीं पढ़े तो फिर वेट करो, मैं पढ़ाई जब ये समझ में आ जाएगा फिर आपको. So non-current assets suppose 200 crores, current assets suppose 80 crores. Shareholder fund suppose 150 crore, non-current liability 50, suppose current liability 8, ये 80 कर देंगे. Suppose current liability कितना डिफरेंस आ रहा है? 50, राइट, 50. ये बैलेंस शीट आपका हो गया है. क्लियर? 280. सपोज ये इन्वेस्टमेंट भी है, समझो क्या ये इन्वेस्टमेंट, ये 180 है समझो, इन्वेस्टमेंट 20 है समझो, राइट. तो फर्स्ट असेट से कैसे ना है,
असेट साइड से कैसे करना है आपको, असेट्स रूट। असेट रूट में फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स दोनों को ऐड करना, माइनस करेंट लाइबिलिटी करना, माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करेंट असेट्स हाउ मच 180, करेंट असेट्स हाउ मच 80, करेंट लाइबिलिटी 50, कितना हो गया ये 210। अब लाइबिलिटी रूट, लाइबिलिटी रूट्स में फर्स्ट आपको शेयर होल्डर फंड रखना है प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी रखना है माइनस इन्वेस्टमेंट करना, माइनस इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में ओनली क्या रहना, डेट रहना, क्या रहना, ओनली डेट, डिबेंचर। शेयर होल्डर फंड हाउ मच, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया ये 210। तो फ्रॉम असेट साइड रूट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट, लाइबिलिटी साइड रूट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कहाँ कहाँ से पैसा लाए आप, शेयर होल्डर से पैसा लाए, डिबेंचर होल्डर से पैसा लाए, और उसमें से कितना बाहर इन्वेस्ट कर दिया वो माइनस करना। तो कितना करे बाहर इन्वेस्ट वो माइनस करना, क्लियर। अब असेट साइड से करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, बाहर का इन्वेस्टमेंट छोड़कर, बाहर का इन्वेस्टमेंट छोड़कर। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करे, इसमें करे, इसमें करे, और उसमें से करेंट लाइबिलिटी को पेमेंट करना रहता है, माइनस कर देना है, क्लियर। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड, अंडरस्टैंड। चलिए लिख लीजिए इसे। तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन शेयर मार्केट मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी 20%, प्रेफरेबल 25%, 20 to 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स बेस्ट कंपनी। विदाउट एनी हेजिटेशन पैसे लगा सकते हो उस पर आप। फिफ्टीन % is also good number, 15, 20, 25। 15 से नीचे रहे तो नहीं लगाना पैसा, रिस्की हो जाता है फिर। तो फिर पैसे है तो पैसे आता है, पैसे कमाने के लिए पैसा ही ज़रूरत पड़ता है। फिर गरीब के पास पैसा नहीं आता, अमीर के पास पैसा आते रहता। क्यों आता, इन्वेस्टमेंट करता है वो। पैसा पैसे को लेकर आता है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, सीए सीए में बन जाओ, पैसा आता, बाद में इन्वेस्टमेंट करो। अब बच्चे अपने इतने नादान है, पहले दिन क्लास को आते, दूसरे दिन एब्सेंट होते, फिर तीसरे दिन आते परेशान रहते। कंसिस्टेंसी नहीं रहती वो लोगों में, ऐसा पढ़ना कोर्स नहीं मालूम रहता है, एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर 40 डेज बिफोर स्ट्रगल करते, उससे कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जाना, कंसिस्टेंट रहना यहाँ पे। एक हिंदी में कहावत है, इसको अच्छे से समझो आप। कहावत ना, एक छोटा सा स्टोरी है, समझिए।
एक पर्सन रहता है, बहुत अच्छा खासा कमाते रहता है पैसा, कुछ टाइम भी नहीं मिलता बराबर से कुछ ज़्यादा चीज़ करने के लिए, तो उसको एक दिन सिर में दर्द होता है, तो डिस्प्रिन टैबलेट खाकर सो जाता हूँ। फिर एक 2-3 दिन के बाद फिर सिर में दर्द होता है, फिर डिस्प्रिन टैबलेट खाकर सो जाता। अब एक दिन सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, फिर भी उस दिन भी डिस्प्रिन खा के उन्होंने मेंटेन कर लेता। अब बाद में एक 6 महीने के बाद से जो है वापस से वही प्रॉब्लम शुरू होता, तो घर वाले बोलते नहीं, अब डॉक्टर को बताओ। तो डॉक्टर बोलता अगर 6 महीने पहले आते थे तो मैं आपको बचा सकता था। इस कहानी से क्या मालूम पड़ा आपको? टाइम पे काम करना, लेट करे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर लेट से डिग्री हासिल करे, लेट से पैसे कमाए, तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। टाइम पे पैसे कमाना, टाइम पे डिग्री आना, तो जिंदगी अच्छा जी सकते हैं आप। आपको जब जरूरत है पैसे की, जब नहीं मिली, जब आपके दिल में खुशी थी जब पैसे नहीं मिले, जब दुखी है पैसे मिले, तो क्या होता? आपका मन उदास है, पैसे खर्चा ही करना दिल ने बोल रहा आपको, उदास है आप, तो मतलब ही नहीं है ना उसका कोई। तो जल्दी पढ़ो, जल्दी पैसे कमाओ, जल्दी जिंदगी अच्छे से जियो। अब जब ज़्यादा बिजी हो जाएंगे आप, बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद, जब बच्चे अच्छे हो जाएंगे जब आपके, तो जब उस टाइम पे आपके पास ज़्यादा पैसा भी है तो टाइम नहीं रहता, आप एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को। इसलिए छोटे एज में अच्छे से पढ़ लेना, डिग्री ले लेना, आप अच्छे लाइफ जी सकते हैं लंबे समय तक। बच्चे समझते नहीं, एबसेंट होते, नहीं पढ़ते, मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए रहते रातों में 1-2 बजे तक। व्हाट्सअप पे क्या, थोड़े बच्चे तो व्हाट्सअप खोल के बैठते, कब फोन पे मैसेज आता कब रिप्लाई करूँ बोल के। ऐसे को बच्चों को भी देखा मैं, तो उन लोग व्हाट्सअप ऑपरेटर बोलता हूँ मैं। मेहनत करना 3-4 साल, 3 इयर्स अच्छे से मेहनत कर लिए, 3.5 इयर्स अच्छे से मेहनत करे, खत्म। उसके बाद एक बार डिग्री आ गया आपके पास तो खत्म है, आपको लाइफ लॉन्ग पैसा आता है। शुरू में डिस्प्रिन टैबलेट नहीं खाता था उन्होंने, डॉक्टर के पास जाता था, वही 100-200 रुपये फीस देता था, तो बचता था ना उन्होंने। नहीं, वहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, 100-200 रुपये, बाद में लाखों रुपए लगाएंगे, मतलब ही नहीं है कोई। चलो एक दिन खाए, 2 दिन खाए, डिस्प्रिन टैबलेट चलता, फिर बार बार रिपीट हो रहा है तो भी नहीं करना ना वो, डॉक्टर से कंसल्ट करना। Capital work in progress means, suppose you are constructing one building, one asset, but that asset is not completed. So you can get any benefit from that? So amount invested, but you are not getting any benefit. So that is also not part of capital employed. बिल्डिंग बना रहे आप, बनी नहीं बिल्डिंग, अभी पूरी नहीं हुई, अधूरी है बिल्डिंग वो, तो उससे कोई फायदा आएगा क्या आपको? पैसा तो लग गया बट फायदा आ रहा है कुछ? इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड नहीं करना उसको। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नाउ क्लियर?
चलिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्लीटेड. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ओनली विल टेक टाइम, आफ्टर दैट स्पीड हो जाता है वो. स्मॉल कैलकुलेशंस ओनली विल बी कमिंग इन अदर रेशियोज. Okay, noted. लिखने लगे लास्ट रो स्टूडेंट्स. Next is return on equity or return on net worth or return on shareholder funds. See, meaning of equity, meaning of net worth, meaning of shareholder fund is same. In equity means, in this we will consider equity shareholders also, preference shareholders also. Equity term is used for both equity shareholders also, preference shareholders also. It means how much return company has earned by investing equity capital, preference capital and reserves and surplus. Previously we calculated the return percentage by considering entire amount which has been borrowed and procured. In that debenture also covered. Suppose if company is calculating the return percentage only from shareholder funds by not considering debenture holder funds, मीन्स डिबेंचर होल्डर का पैसा छोड़कर खाली शेयर होल्डर के पैसे से कितना रिटर्न कमाए वो मालूम करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी. डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर दोनों के पैसे से कितना कमाए उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर फ्रॉम बोथ, हाउ मच कंपनी अर्न फ्रॉम बोथ फंड्स, हाउ मच कंपनी हैज अर्न, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ ओनली फ्रॉम शेयर होल्डर फंड्स हाउ मच कंपनी हैज अर्न, if that percentage we are calculating, it is called as what, return on equity. And again only from equity shareholder fund how much profit is earned by the company, that is called as return on equity shareholder fund. तो सभी के पैसे से कितना कमाए, शेयर होल्डर के पैसे से कितना कमाए, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे से कितना कमाए. आया समझ में? सभी के पैसे से जो कमाए उसको बोलते हैं आरओसी, शेयर होल्डर के पैसे जो कमाए उसको बोलेंगे आरओई, और ओनली इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे जो कमाए उसको बोलेंगे आरओईएस, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स. ये सच लिख दीजिए उसको आप. क्लियर? तो रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय इक्विटी. क्या रहेगा फार्मूला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय इक्विटी. तो इक्विटी मीन्स व्हाट, शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, दोनों का फंड आएगा उसमें. किसका फंड आएगा? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस. तो इक्विटी शेयर होल्डर के दो फंड्स रहते हैं यहाँ पर, इक्विटी कैपिटल भी उनका रहता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी उनके रहते हैं, बिकॉज वो आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ कंपनी. शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर नहीं इक्विटी शेयर होल्डर. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर. तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड अगर पूछे तो उसमें दो आइटम्स आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑल्सो,
reserves and surplus also. तो इसलिए इक्विटी व्हेन वी कैलकुलेट इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तीनों आएगा, माइनस फिक्टिशियस एसेट, माइनस फिक्टिशियस एसेट. देखिए इधर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट. नाउ आई एम कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड. अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ओनली इक्विटी शेयर होल्डर के फंड से कितना पैसे कमाए कंपनी. तो जब मैं फंड करूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बट प्रॉफिट्स ऑल्सो चेंज. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑल्सो. सभी के पैसे से कितना कमाया, फ्रॉम ओवरऑल फंड्स हाउ मच कंपनी हैज अर्न, इन दैट वी विल कंसिडर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज डिबेंचर shareholder we have to pay interest, shareholder we have to pay dividend. So before interest, before dividend, because debenture shareholders also coming in capital employed, shareholders also coming in capital employed. So that's why we are not deducting interest also, we are not deducting dividend also. This is the reason ki formula is PBIT. Now return on equity में debenture shareholder हट गया. कौन हट गया? खाली shareholder हो गया. कौन हो गए? तो डिबेंचर होल्डर हट गया तो उसका इंटरेस्ट भी हट गया. तो पैट से कैलकुलेट करना है. किसे करना? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि डिबेंचर होल्डर भी हट गया और उसका इंटरेस्ट भी हट गया. इसलिए क्या किसे करना भी है? पैट. पैट बाय इक्विटी आएगा फार्मूला. क्या आएगा? पैट बाय इक्विटी. तो अब इक्विटी शेयर होल्डर से करना है आपको. तो डिबेंचर होल्डर हट गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हट गया. डिबेंचर होल्डर्स ऑल्सो आउट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑल्सो आउट. So debenture interest also not considered, preference dividend also not considered, because for preference shareholder what will paid? Preference dividend. तो interest भी हटाओ, preference dividend भी हटाओ. तो PAT minus preference dividend आएगा फार्मूला. क्या आएगा? PAT minus preference dividend by equity shareholder fund. क्योंकि अब equity shareholder है तो preference shareholder नहीं है, तो preference shareholder का dividend भी नहीं रहना प्रॉफिट में, इसलिए ये फार्मूला आ रहा है. आया समझ में? लॉजिकली याद करना है इसको आपको. क्लियर? नाउ नोट दिस. नहीं उसकी जरूरत नहीं है, 1 माइनस करे तो. नहीं 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 वैसा नहीं करना है आपको. ऐसा करे तो मार्क्स भी नहीं देता हूँ. शॉर्टकट्स जहां पे करना है वहां करना, जहां नहीं करना नहीं करना. So equity shareholder funds only we have to take equity capital, reserves and surplus. If any fictitious asset there, subtract. पहले सीए फाउंडेशन में था चैप्टर, ये इसमें था, ये फाउंडेशन में था रेशियो चैप्टर. ये अब इंटर में शिफ्ट करे वो लोग. चलिए थर्ड एंड फोर्थ नोटेड. So next class we'll start other ratios related to
profitability and activity turnover solvency ratios. Main twist will be there in profitability ratios. Once this is completed, remaining are not difficult, easily understandable.